Nokia Phone Limited supplies goods through e-commerce operators. Nokia Phone Limited collects money directly from the customer. This is important. Who is collecting consideration? That is important. Here Nokia Phone is collecting money. ई-कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट नहीं कर रहा है, जो सेलर है वही कलेक्ट कर रहा है कंसिडरेशन. If seller is collecting consideration on his own, then it is directly from the customer. The turnover of Nokia Phone Limited is 15 lakhs. What is the limit for turnover? 40 lakhs का limit है. महाराष्ट्र and other states के लिए 40 lakhs. Supply of goods threshold limit is 40 lakhs rupees. If he crosses this 40 lakh limit, then he has to register. Nokia Limited supplies goods through Snapdeal.com. Snapdeal.com, an e-commerce operator. So here Snapdeal is not collecting money. Supplier is collecting money. Nokia Limited is collecting money from the customer. In that case, you have to check the turnover. If it is below the threshold limit, Nokia Phone need not get registered. Nokia Phone Limited need not get registered as their turnover is below the threshold limit, and also they collect the consideration directly from the customer, not through e-commerce operator. What is e-commerce operator? If e-commerce operator is collecting money, in that case there is no turnover limit, no threshold limit for Nokia. Then they have to compulsorily register under GST. E-commerce operator as well as supplier supplying goods or services through e-commerce operator needs to compulsorily register under GST Act. The threshold is not applicable to them. If e-commerce operator is collecting money, consideration in respect of supply made on e-commerce operator is not collected by e-commerce operator. जो कंसिडरेशन है, सपोज जो उसने फोन सेल किया, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने फोन सेल किया नोकिया का, snapdeal.com, ई कॉमर्स ऑपरेटर snapdeal.com, they have not collected consideration. Nokia Limited, they have themselves collected money from the customer. In that case, we will apply the threshold limit. Supplier का जो भी लिमिट्स है देखना है कौन से स्टेट में है. अगर स्पेशल स्टेट्स के अंदर आता है तो आपको 10 lakhs की लिमिट है. 4 स्पेशल स्टेट्स, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा, उनके लिए 10 lakhs है. और नेक्स्ट लिस्ट है जो 7 स्टेट्स है, उनके लिए 20 lakhs है. और रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, remaining states will be having 40 lakhs limit. So the threshold benefit for registration, supplier will be eligible to claim the threshold benefit for registration. वहां पे आपको 40 lakhs, 20 lakhs और 10 lakhs की लिमिट देखनी है. जब सप्लायर कंसिडरेशन कलेक्ट करता है तभी अपने को थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी है. जब सप्लायर कलेक्ट नहीं करता है तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखनी है. ओके, if e-commerce operator is collecting money, then in that case the threshold limit will not be applied. With 1 rupee sales also supplier has to register. With the 1 rupee sale also they have to register compulsorily under the GST Act. So it is better to
collect money on its own. Okay. यहाँ पे नोकिया फोन लिमिटेड अच्छा कर रहा है कि खुद का पैसा खुद ही कलेक्ट कर रहा है. ओके. Here Nokia phone limited Nokia is considering taking money from the customer. If Nokia is collecting money from the customer, in that case, threshold limit will be applied. Threshold limit is 40 lakhs. We will assume that Nokia Limited comes in the remaining state. Okay. So this is the threshold limit. I will write TL शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. ये थ्रेशोल्ड लिमिट है. जैसे ही इसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस होगा, इनको जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा. टर्नओवर लिमिट मोर देन 40 lakhs, then they have to register under GST. सो नोकिया को जीएसटी में रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले अगर कस्टमर से आप पैसे खुद ही ले रहे हो तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट लगानी है. अगर नोकिया कलेक्ट नहीं कर रही है, snapdeal.com Snapdeal is collecting money from the customer. In that case, there is no threshold limit. This is money collected by Snapdeal from the customer, and then Snapdeal is giving money to Nokia. Okay. Snapdeal is collecting money from customer and it is giving to Nokia. In that case, we will not apply threshold limit. Compulsorily register under GST. Compulsory registration under GST. यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्नैपडील ने कलेक्ट किया है पैसा. अगर स्नैपडील कलेक्ट कर रही है तो स्नैपडील को भी और नोकिया को भी दोनों को रजिस्टर करना है. कंपल्सरीली रजिस्टर स्नैपडील एंड नोकिया बोथ सप्लायर एंड द ई कॉमर्स ऑपरेटर. यहाँ पे इसको हाईलाइट करो. ई कॉमर्स ऑपरेटर एज वेल एज सप्लायर. सप्लायर इज नोकिया. Snapdeal is e-commerce operator. They are supplying goods or services through an e-commerce operator needs to compulsorily register under the GST. इसलिए मैंने यहाँ पे compulsory word डाल दिया है क्योंकि इनको threshold limit भी नहीं देखना है. और अगर exception भी आपको पढ़ना है अच्छे से, अगर नोकिया खुद से पैसा कलेक्ट कर रही है तो ऐसे केस में आप threshold limit महाराष्ट्र में अगर नोकिया लिमिटेड है या कोई रिमेनिंग स्टेट्स में आती है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं आ रहा है नोकिया, तो ऐसे केस में कस्टमर से डायरेक्टली अगर सप्लायर खुद ही पैसे कलेक्ट करता है, स्नैपडील का इसमें कुछ भी रोल नहीं है, सप्लायर हिमसेल्फ इज कलेक्टिंग मनी डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर, then we will apply the threshold limit for registration under GST. So this is main question which can come in the exam. E-commerce operator and supplier need to get compulsory register under GST if the consideration is collected by e-commerce operator. The threshold limit is not applicable in that case. If the consideration is collected directly by the supplier, in that case,
In that case, Nokia Limited has to register when they cross the turnover limit or threshold limit above 40 lakhs. Is it clear? Any doubts? If it is clear, write clear in the chat box. Then I will move on the next question. Okay. So question number 5, we have completed. Nokia phone supplying goods to customer and collecting money from the directly from the customer. If they are directly collecting money from the customer, they have to check the turnover limit. If it crosses 40 lakhs, then they have to register. Otherwise, they need not get registered because turnover is only 15 lakhs. Turnover is only 15 lakhs. They collected the consideration directly from the customer, not through e-commerce operator. इको मीन्स ECO शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में दिया है. ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए इको लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्विक सेल्स कंपनी एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर sells his own watches under the brand name QuickTime. Under the brand name QuickTime. खुद का ही ई कॉमर्स है प्लेटफॉर्म और खुद के ही ब्रांड को सेल कर रहे हैं. State whether the quick sales company is liable to collect tax at source. If an e-commerce operator sells his own goods, अगर स्नैपडील अपना ही गुड्स स्नैपडील पे बेच रहा है, क्विक टाइम कंपनी, क्विक सेल्स कंपनी सेलिंग गुड्स ऑन द ब्रांड नेम ऑफ क्विक टाइम, in that case it is not liable for collection of tax at source. उसको TDS TCS कलेक्ट नहीं करना है, CGST SGST या IGST कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद के ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है. उसके ऊपर जो भी GST होगा वो गवर्नमेंट को उसको फॉरवर्ड करना है. जो 18% का GST है या 28% का GST है, जो भी है GST वॉचेस के ऊपर, सपोज 18% है तो 9% CGST बिल में आएगा और 9% SGST. जो वो 1% हम कलेक्ट करते थे वो यहाँ पे नहीं आएगा. तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का मतलब वो जो 1% हम एक्स्ट्रा कलेक्ट करते थे वो कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. Next question is Amazon.in, an e-commerce operator, exhibits Nokia mobile phone 40,000 plus GST at 18%. This is the value of supply. Without GST, supply of mobile phone, actual value of mobile phone is 40,000. CGST 9% and SGST 9%. This is the invoice of 47,200. The value of supply is 40,000. Assuming it is to be a single and standalone transactions for the month of December 2020. So this is a single transaction of this Amazon.in platform of e-commerce. They have sold a phone of supplier Nokia. Now we are only interested who is collecting money. If Amazon is collecting money, then they have to collect TCS also. Okay. If they are selling any goods and collecting consideration, Amazon is collecting consideration.
In that case, they have to collect tax collection at source. Supplier is Nokia, recipient is Mr. X. Mr. X is purchasing from e-commerce operator Amazon.in. On the website of Amazon.in, Mr. X has placed the order to purchase Nokia phone. Now, when this consideration is collected, 47,200, never calculate 1% on this amount, 47,200. Always collect money on the value of supply. You have to calculate TCS tax collection at source at value of supply. That is 40,000 into 1%, 400. 40,000 into 1% SGST, 400. 400 CGST, 400 SGST. Now they have decided our Indian indirect tax के अंदर जो dates है इसका due date है 10th of next month. If you are selling in the month of December, 10th of next month is the due date for paying the tax collection at source. So Amazon has to forward this money to Indian government, to central government 400 and to state government 400. On the portal, they have to show electronically that they have sold these goods of Nokia. They have sold a value of supply of 40,000 mobile phone. Along with that, they have collected GST, 400 TCS and 400 state GST. So this form they are going to fill GSTR 8. They are going to fill electronically for outward supply made by Amazon and the amount collected by Amazon. Now what supplier will do after this form is submitted on the portal? This form is submitted in the portal and the GST number of Nokia Limited is also uploaded that this supplier has sold through this e-commerce Amazon.in. So in this way, credit of TCS, supplier supplying through e-commerce operator can claim the credit of TCS paid in his electronic cash ledger. So the tax collected at source is paid by the Amazon.in. So here the credit of TCS can be taken up by the Nokia Limited. Supplier supplying through e-commerce operator, they can claim the credit of TCS once this form is uploaded by Amazon. They can take a credit of TCS. So only thing you have to remember is if the consideration is collected by e-commerce operator, then you have to collect along with the money, along with the CGST of the product, that is 99%. You have to collect also TCS. Amazon will also collect TCS from the customer on the value of supply, that is 40,000. Always calculate CGST and SGST 1% always on the net value of supply, not on the final amount. Always the due date will be 10th of the next month. जिस मंथ में सेल किया है उसके दूसरे महीने के 10th को आपका ड्यू डेट है. उससे लेट होगा तो आपको पता है पेनल्टी लगता है, 18% का पेनल्टी लगता है. जो भी लेट करता है विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, अगर आप जीएसटी को फॉरवर्ड नहीं करते हो गवर्नमेंट को मंथली 10th ऑफ द मंथ, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ अगर हमने नहीं किया तो उसका 18% जीएसटी आपको भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा उसके ऊपर. दैट मीन्स पेनल्टी. Is it clear? Shall we move forward? If it is clear, tell me in the chat box.
हेलो, समझ में आया? वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर ई कॉमर्स ने कलेक्ट किया है ना, तो उनको टीसीएस भी कलेक्ट करना है साथ में। अगर आप सोच रहे हो कि ये 2 बार सीजीएसटी 2 बार एसजीएसटी आ गया, तो ये जो टैक्स है ये प्रोडक्ट के ऊपर है 9% का, और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ये अमेजोन क्योंकि बेच रहा है इसलिए उसको टैक्स कलेक्ट करनी है एट सोर्स। यू आर सेलिंग थ्रू समवन एल्स ना, आप डायरेक्ट सेल नहीं कर रहे हो। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर सेल कर रहा है तो क्या ई कॉमर्स को टैक्स नहीं लगेगी जो भी वो आउटवर्ड सप्लाई करेंगे? अमेजोन ने आउटवर्ड सप्लाई किया, कमीशन कमाया, उसके लिए इनको टीसीएस भी कलेक्ट करने को बोला है। इज इट क्लियर? हेलो, now what is the difference between electronic cash ledger and electronic credit ledger? In the electronic cash ledger, we pay the tax, interest, penalty, cess and other taxes. In the electronic credit ledger, only the output tax is paid. Only output liability is paid. Credit to the ledger will be through the payment challan. You have to generate the challan and you have to pay the tax, interest, penalty, cess and other taxes. Refund of excess balance can be applied through GSTR 3. If you have excess balance, you can apply to GSTR 3. Credit to the ledger. For electronic credit ledger, credit to the ledger will be through input tax credit. आपको पता है ना, आउटपुट टैक्स में से हम आईटीसी डिडक्ट करते हैं। जो परचेज के ऊपर हमने टैक्स पे किया है, आपने ये परचेज के ऊपर टैक्स पे किया परचेज के टाइम पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑन परचेज tax paid. So you will take a credit of tax paid already on some goods purchased, and you are selling goods, right? On sale, tax collected, right? You are charging GST to your customers and you're collecting tax. So this is output tax. From the output tax, whatever tax you have collected, okay, you will adjust the tax which you have paid. On sale, you have collected tax from the customer. You will adjust input tax credit, that is tax already paid at the time of purchase. So whatever balance you are getting, if you are getting excess balance, then you will get a refund for excess balance in credit ledger, may be refunded only through terms specified. If you are getting negative answer, that means परचेज पे जो टैक्स पे किया वो ज्यादा है और जो सेल्स पे टैक्स कलेक्ट किया है वो कम है, आपने गुड्स कम सेल किए, परचेज ज्यादा किए हैं। सपोज हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है, हमने 10,000 गुड्स परचेज किए, उसके ऊपर 2,500 टैक्स पे किया और हमने सिर्फ 5,000 गुड्स सेल किए, ठीक है, तो 1250 का ही हमने टैक्स कलेक्ट किया। Tax collected is 1250. Tax paid is 2,500. So you will get net amount negative, that will be refund. If you are getting negative answer, that amount you can utilize in, अगर ये CGST है तो CGST का इसमें से पे होगा
CGST के आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस होगा CGST आउटपुट टैक्स माइनस CGST इनपुट टैक्स okay, and then if you have any balance, ठीक है, यहाँ पे अगर बैलेंस नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स यू हैव एक्सेस बैलेंस, आउटपुट टैक्स आपका कम है, इनपुट टैक्स ज्यादा है, आउटपुट टैक्स कम है और इनपुट टैक्स ज्यादा है, परचेज के टाइम पे आपने बहुत टैक्स पे किया है, उसका बैलेंस अगर बच रहा है तो आप कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, यू कैन पे IGST, you can pay IGST tax similarly if any balance left, so you have to make this amount utilization of CGST for paying IGST. Okay, so this is electronic credit ledger, utilization of input tax credit towards other main major books, that is IGST. You cannot take CGST input tax benefit for utilizing SGST. CGST और SGST का एक दूसरे के साथ नहीं होता है, सेंट्रल और स्टेट का। अब CGST का जो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, रिफंड आ रहा है, उसको रिफंड तो नहीं मिलेगा, उसका आप यूटिलाइजेशन IGST की टैक्स पे करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। So manner of utilization we have already studied in ITC chapter, and this is the chapter where we are studying two ledgers online GST portal. On the online GST portal you will find two ledgers. These are the two ledgers which are prepared online. Whatever purchases you have done and you have paid the tax, you can claim the credit only when the supplier is putting your GST number in his bill and is uploading the outward supply in the GSTR1. So all the outward supply, they will mention the name of the customer, and we can claim the credit only when he is uploading his outward bill, invoice bill. That is output tax collected by the supplier, and I can claim the ITC on that amount that is paid by me. Okay. So if I have paid more tax in CGST and I have collected only less tax from CGST side, then if extra balance is left in ITC of CGST, that balance I can utilize for paying IGST output tax. If it is, if there is any liability to pay IGST still after adjusting IGST from IGST, then in that case, I can adjust CGST input tax excess credit I can utilize for paying the liability of IGST. So there are three major heads. CGST, SGST, and IGST. These are the three major heads. And there are minor heads called as tax, interest, penalty, cess, and other amount. These are the minor heads, and the major heads are IGST, CGST, and SGST. Always write first IGST because as per the rule 88A, we have to utilize IGST input tax credit fully. ITC of IGST is to be exhausted fully.
जो भी आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स है उसमें से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे। अगर फिर भी कुछ बच रहा है, बैलेंस रिफंड में नहीं मिलेगा, उस रिफंड को आप दूसरे सीजीएसटी में या एसजीएसटी में यूटिलाइज कर सकते हो। जीएसटी की लायबिलिटी और उसके बाद एसजीएसटी की लायबिलिटी आप यूज कर सकते हो। So excess credit of ITC you can utilize first towards CGST and SGST in equal proportion or any proportion. आप चाहो तो जहां पर टैक्स आपकी लायबिलिटी बन रही है आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, जहां पे रिफंड मिल रहा है उसको आप छोड़ दोगे। और सीजीएसटी का कभी भी आपका आईटीसी जो आएगा उसमें से सीजीएसटी का ही माइनस होगा। CGST output tax adjusted with ITC of CGST, and then if any balance left, excess credit of ITC CGST we can utilize towards IGST। जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पर, अगर ब्रैकेट में आ रहा है तो रिफंड, अगर सिर्फ सिंपल आ रहा है तो लायबिलिटी। सो दिस इज लायबिलिटी। इफ अमाउंट कम्स इन ब्रैकेट नेगेटिव आ रहा है तो ये रिफंड है। दिस इज लायबिलिटी and this is refund. Similarly for this ITC of SGST का output tax adjustment with ITC of SGST, if any balance left, that means we have balance of ITC, excess credit of ITC SGST, SGST excess credit we can utilize for paying IGST liability, and if the amount comes in positive, it is a liability we have to pay. This amount is payable. And if the amount comes in bracket, it is refund. ओके, सो जो भी आपका मेजर है, मेजर बुक है, उसी में से वो आईटीसी उसका ही माइनस करना है। लेकिन जो ये रूल है ना, ये रूल है 88A। एज पर रूल 88A, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस क्रेडिट ऑफ आईटीसी, अगर ये अमाउंट पड़ा है अभी भी, ये एडजस्ट करने के बाद भी कुछ बच रहा है, तो इसको पहले सीजीएसटी में यूटिलाइज करना है। अगर सीजीएसटी के में जरूरत नहीं है तो पूरा एसजीएसटी में यूटिलाइज करो। अगर एसजीएसटी में जरूरत नहीं है तो पूरा सीजीएसटी में यूटिलाइज करो। जहां पे मतलब टैक्स कम हो सकती है, हाउ वी कैन एडजस्ट अवर टैक्स। वी आर नॉट deliberately reducing our liability or tax. We are adjusting the tax with the rules. जो रूल्स में दिया है वैसे ही हम कर रहे हैं।